Now I would like to request Professor Ashwini Kumar Tiwari, our Dean of International Relations and Outreach, to come up on stage and welcome today's speaker, Professor E.V. Gireesh. So please come on stage. Professor Gireesh, you are also requested to come on stage. Thank you very much, sirs. Here was a brief introduction of Professor E.V. Gireesh. Professor E.V. Gireesh is a competent management professional and trainer with over 25 years of experience in imparting behavioral training programs for corporate houses, educational and social institutions. He is an international transformational speaker and success coach with demonstrated ability to function effectively in an adverse environment as well as train with diverse learning styles. He is associated with Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, an international socio-spiritual organization which has NGO status with United Nations and consultative status with UNICEF and ECOSOC. He served as a Rotaract president and is now a Rotarian. He also served as a faculty member in Mumbai University for more than 11 years. He was a keynote speaker at the 24th Rotary District Conference held at Colombo. Today's topic is Complete Wellbeing and the Art of Winning. Professor Gireesh, please come on stage. I would like to hand over the mic to Professor Gireesh. Om Shanti. I want you to repeat this word, Om Shanti. Can you say it with a little smile on your faces? With a lot of love and gratitude? With a lot of energy and enthusiasm? Fantastic. Namaste and good evening. Can I hear a good evening from you? Yeah. Is your evening good? Yes. Yeah, for the organizers it is good. The others who are here by force, I'm very sorry. How many of you are here by choice? Raise your hand. Acha. Gee. I'm so happy for the one who has switched on the lights, because it seems that it's a cinema theatre, right? So even if you doze off to glory, the faculty would not understand. Anyway, before I start, my sincere thanks and appreciation to IISER, the organizers, the dean, director, faculty members, and my wonderful students. It's always a great pleasure in interacting with young minds and share few aspects and the deeper understanding of human life. I'll make it as easy and simple as possible. Maybe the kind of education you get, it may sound a little trivial, but it's of very great, profound importance. Maybe at times we are so obsessed with complexities of life that we miss on to the very little, simple aspects of life. And these little things makes our life really complicated. So I have a request. I don't want it to be a monologue. I want it to be a dialogue. You know what's the difference between a monologue and a dialogue? What's a monologue? Someone is speaking, one person is speaking. Okay. And what the other person? Dialogue is both of them are. Okay. So
gave half of the definition of monologue. I'll complete it. Monologue is I stand here and speak, speak, speak. You sit there and sleep, sleep, sleep. Listening is as good as sleeping. There's a difference between listening and active listening, yeah? Okay. So I want it to be a dialogue, and I love my Indian students, you know? Speakers, orators, teacher like me and better than me. When we talk to you in the class, हमको पता ही नहीं चलता भारतीय स्टूडेंट सुन रहा है कि सो रहा है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स आर सो डैम एक्सपर्ट, वो आंखें खोल के भी सो सकते हैं, and they can keep nodding their head off that. I mean, I'm not speaking about you, I'm speaking about my Mumbai students, yeah? Just from my understanding, how many students here in this audience? Raise your hand. Students? Okay. Teachers, faculties, office bearers, raise your hand. Okay, gee. So I'll base my content more to do with the students. Would that be fine? Yeah? Okay. So that it benefits them. Pardon? It's for the students only. Okay, na? So when we speak about complete well-being, it encompasses all the dimensions of human existence, friends. So I want it to be a dialogue. You know, dialogue is, you will also speak, you will also participate. Will you participate? Yes. Oh, fantastic. I'll pose a lot of questions to you. Okay? Would you respond? Yes, Yes, sir. sir. Fantastic. You know, post-lunch sessions are very difficult. Okay? For whom it is difficult? For the teacher or for the audience? क्या बात है सर, आप इतने मेहरबान हैं मेरे पर, ठीक है ना? I thought you would say it is difficult for the audience, right? चलो, it's equally difficult for both of us, right? Anyway, so I want you to participate. From the word go, I'll pose you with a lot of questions. Now, the purpose of those questions is not to question your intelligence or your experience or your credibility. It is just to evolve the discussion. Would that be fine? Yeah. So it's like you are always inquiring things, and in the process of inquiring, maybe we will head towards certain realities of life, and that's what the basic purpose is. So when we are speaking about complete wellness, it encompasses all the dimensions of human existence. By and large, we focus more on the physical health. What we miss is our mental and emotional health, right? So today I'll base my entire discussion revolve around these two very important aspects. Mind over matter or matter over mind. Which plays more important role and impacts the other? It's mind over matter or matter over mind? Mind over matter. Yeah. Yeah. Is it true? So if I ask you a question, what do you do to enhance your mind, to maintain its tranquility, to maintain its good health? Sleep in the class. Sleep also has to be in the night, and that too early to bed and early to rise, which we don't practice. Yeah, we to sleep late and get up late. So the melatonin secretion, and आजकल तो हमारा ये भी हाल हो गया है कि हमारा entertainment भी बेड में ही होता है with respect to a mobile, correct? So the blue rays, it tricks your brain and it says, sorry, it's not time to sleep because of the rays, and the melatonin secretion goes down. And then at this age also, if you don't sleep for a pretty good time, the quality sleep is not there. Very early age, you know, mid-30s, people have a lot of challenges, physical challenges. And let me, share a very beautiful experience.
I had the privilege of working with Dr. APJ Abdul Kalam. I mean, thanks. I was a part of the Brahma Kumaris when he was just the president, and before he became the president of the country, when he was the chief of DRDO, that's where he came in contact with the Brahma Kumaris. You know this organization, Brahma Kumaris? You have heard about it? How many of you have heard about the Brahma Kumaris? Okay. So it's basically it's a non-governmental, socio-spiritual, value-based organization. We have a great consultative status with the United Nations. We have presence in 140 countries. We do offer our services absolutely free of cost. We are generally identified with this white dress, although the dress is not very important. Something else is more important. So Dr. Kalam, he was working on 3 projects: heart attack, AIDS, and cancer, chief of DRDO. And maybe what really concerned him at that time was more than 70% of the Indians, this is pre-2000, 70% of the Indians at that time couldn't even afford an angiography. Forget about an angioplasty or a bypass surgery or a stent. Heart ailments and treatments are very pretty costly. So he was working out onto certain other alternative mechanism to reduce, challenges with cardiac health. And that's how he tied up with the Brahma Kumaris. Now, this is a very beautiful synergy between science and spirituality, because I come from a very heavy spiritual background, and he represents a very heavy scientific background. So the synergy was very interesting, and it was new for us. So he teamed up his DRDO scientists with the Brahma Kumari sisters, and the hypothesis was very simple, friends. And if I have a block in the arteries, or maybe my pancreas has shut its factory, maybe I'm diabetic. What does diabetes mean? The body is not producing insulin. Per se, the pancreas has stopped production of insulin. Yes? And we are so bombastic about science and medical science, और हम कहते हैं भैया तुम्हारा खुद का फैक्ट्री बंद कर दिया, ताला लगा दिया, तो चिंता की कोई बात नहीं, हम बाहर से सप्लाई ले लेंगे. So insulin from outside. Question, friend, quality of a physical health of a person who is insulin dependent, what happens? Is it very good? No. Now, the hypothesis is, ये pancreas को किसने ताला लगाया? Who is responsible for my pancreas shutting down its factory of producing insulin? जोर से बोलिए. Oh, wonderful, the mind. It's myself. So if myself can cause so much of trouble, can this myself be empowered and be used to rectify the error? Hello? Yes. I mean, it can equally work. And now that was the point. Now the question is, how do you reprogram that mind, which caused the trouble, now redo all the wrong? And that's where we did an 8 years of research. And in that 8 years of research, we had 2 groups, one a control group, the other group, and we worked on to 3 dimensions. One was diet, high fiber, low fats, low cholesterol food for both the groups. A little change in their lifestyle. सुबह कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है. Little routinity was maintained for both the groups, and little exercise, little aerobic exercise, and that too a 45 minutes of a little brisk walk. Nothing additional to this. And the third thing, एक ग्रुप को meditation सिखाया, एक ग्रुप को meditation नहीं सिखाया. And we were trying to find the efficacy of the Raj Yoga meditation on regressing coronary artery disease, that is regressing the cholesterol deposits. Rest all the parameters were same. Every test was done at DRDO. Even the hormonal tests, we did extensive, there were endocrinologists, fitness expert, cardiologist, spiritualist, meditation expert, and a big team. And we did this research for 8 years, and the results were so fantastic. I just got late because I had another program, rushed back, had my lunch, and came back immediately. I missed bringing my pen drive, or else I could have shown you
Dr. Kalam speaking. So after 8 years of research, World Congress on Clinical and Preventive Cardiology, Dr. Kalam presented that particular report of 8 years. And today, I feel really happy and proud to mention that today we have more than 10,000 angiographic evaluation. Not 1, not 2, not 3, not 100, not 200, not 1,000, 10,000 angiographic evaluations to substantiate that yes, if you take care of your mind and if you can consciously channelize your thought processes from negativity, from frustration, from irritation, from insecurities, from competition, from jealousiness, to something which is more peaceful, more happy, more to do with confidence, more to do with tranquility and stability, it has a very, very positive impact even on the physiology. And if I need to quote his statement, he says, your thoughts are just not mere vibrations in the air. They are definite electrochemical processes taking place in your hypothalamus with physiological consequences. अर्थात अगर मैं हिंदी में कहूँ, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका शरीर करेगा. Control P enter, your computer will take a printout. ऐसा शायद maybe with artificial intelligence and other chat GPT 4 and everything, I don't know what's going to happen in future. But ऐसा कभी नहीं होगा कि Control P enter, your cartridge is there, electrical supply is there, print page is there, everything is set. Control P enter and your printer says जाओ आज मैं प्रिंट आउट नहीं देता, गलत पेज का प्रिंट आउट दे रहे भैया तुम्हारा गलती से. Hello, the printer has no intelligence of its own other than what is being programmed. Similarly, your heart, your kidney, your lung and each and every organ system will only execute what is programmed, nothing more beyond that. So something more profound is there with senses other than your organ system. So, thoughts will get converted into matter. Now, thought is the software. You just cannot see it. It will get converted into matter in the form of neuropeptides, and it will go and speak to 40 to 50 trillion cells of the body. And if my thoughts are full of distress, full of worry, fear, anger, irritation, frustration, the brain starts pouring negative hormones. Nephrines, epinephrines, cortisols, you name it, friends. And there are positive hormones, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, painkiller. So you have a pharmaceutical factory inside. And we are so heavily dependent on the medicine outside, and they have so much of side effect. This won't. And it starts pouring stress hormone. And your parasympathetic system takes dominance और वो सब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा. फिर आप करा लीजिए जितना रेडिएशन, कीमोथेरेपी, believe me, the damage is already done. If you can reverse this process, now this is where the question is. It's your choice, it's your willpower, it's your decision. If you can change those distressing thoughts to something which is more positive, peace, happiness, bliss, the brain starts pouring the good hormones, and the parasympathetic system takes prominence, and it will rectify the damage. So there is a doctor within you, which I call it as an invisible doctor. And when I speak to the doctors community, there's a very beautiful statement. A doctor treats. Hello? A doctor can only treat you. Healing is your prerogative. Healing doctor नहीं कर. हम वैसे तो doctors को बोलते हैं, rather than a doctor you should also become a healer. But healing का complete function, your complete responsibility lies with you. So I have two patients, same symptoms. I prescribe X medicine to A and the same X medicine to B.
but the response of that medicine may differ completely. Yes or no? अब जब मैंने ये जो मेडिसिन का अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग, जमाने का टेस्टिंग करके फार्मास्यूटिकल में लॉन्च करता है, ये चेंजेस में, but the body is responding differently. So there is something else also plays a very important factor, and that's what we call it as the self. So I'm reminded of a very beautiful instance. Long back, I was asked to do a program for the business community. So in Mumbai, there is an area which is called as the Thane Belapur Industrial Estate, a huge, big one. And I was asked to go and do a program on self-management. I come from a management background, and we are taught, I have taught others all M's of an organization. The most important criteria of an organization is money. And here comes a financial management professor. He'll teach you everything about short-term capital, long-term capital, fundamentals, technical analysis of everything, cash, fund flow, everything. So the other professor walks in and says, "वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी important एक चीज है, and that is market." Oh, comes marketing management. Third professor comes, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा. Third is very important. That's human resource, men. The third M, human resource management. फोर्थ वाला मटेरियल्स मैनेजमेंट, फिफ्थ मेथोडोलॉजी. हर व्यक्ति को लगता है वो इंपॉर्टेंट है. M. 2 years of an MBA program, 1 M is missed. It's not taught. I should have requested madam, before handing over the mic, she should have made a very categorical statement. Please keep your dash on a dash mode. What is that? Oh, fantastic. Please keep your mobile phone on a बोलो तो सही बच्चों. जो साइलेंट होना चाहिए वो तो एक्टिव है, और जो एक्टिव होना चाहिए वही साइलेंट है. Anyway, your mobile phone on a silent mode. ऐसा क्यों कहा जाता है? मैडम ने नहीं कहा, that's a different equation. ऐसा क्यों कहा जाता है very categorically? नहीं तो क्या हो गया? Disturbance and distraction. ठीक है. So I have a request. Can I? Please don't keep your mobile phone on a silent mode. Let it ring. जब मैं ये कह रहा हूँ ना, कुछ बच्चे बोल रहे, सर आपके जैसे 2-4 टीचर हमको यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में मिल जाते तो हमारा जिंदगी थोड़ा आसान हो जाता था. इतने लिबरल, इतने कंसिडरेट. Yeah, I'm very serious about it. Let your mobile ring. Can I request? If possible, keep your mind on a silent mode, because the disturbance is here. It's just a stimuli, it's a trigger. Yes or no? Yes. I remember I was doing a program in Asian Institute of Gastroenterology, AIG in Hyderabad, a very beautiful hospital, a big auditorium, and we're all doctors, paramedics, surgeons, nurses. So I was addressing them, and suddenly किसी doctor का mobile phone ring हुआ. So the master of ceremony became very active, took the mic from me and made the announcement. Please keep your mobile phone on silent mode. We don't want any disturbance. So मैंने जब माइक लिया, मैंने कहा नहीं, आपका फोन रिंग भी होगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको बजने दीजिए, इसको शांत रख लीजिए. पता है क्यों? So let us assume we are 100 people out there. एक व्यक्ति का मोबाइल बजता है, हम 99 लोगों का भी बजता है. इसका तो साइलेंस ही नहीं हो रहा है, और सारी दुनिया को हम लोग कंट्रोल करके रखे हुए. So as I said, please keep your mind on a silent mode. There was a cardiologist, a very senior cardiologist, little on the elderly side. He said, Gireesh, I have a question for you. I said, sir, please go ahead. He said, my grandson, who studies in the 2nd standard, 6 years of age, he knows how to keep the mobile on a silent mode. He plays and fidgets with that mobile. 3 seconds में ये छोटू has no idea about what electronics is all about, what mobile technology, physics का ABCD नहीं पता, वो भी मोबाइल को साइलेंट कर देता है. मोबाइल को लेता है,
ऑन करता है, ड्रॉप डाउन करता है, साइलेंट बटन, फ्लाइट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, वाइब्रेटरी मोड, जितना भी मोड मनुष्य ने बनाया. Just 3 seconds, the little one can do it. I said, sir, your observation is perfectly fine. आप कहना क्या चाहते हो? You know what he asked me? Can I pose the same question to you? He said, I am a cardiologist. I said, yeah, ठीक है ना. Well, and again, I am a cardiologist. मैंने कहा ठीक है sir. बोला Gireesh, I know everything about this. मैंने कहा so what? Then he asked, यहाँ कौन सा बटन दबाऊं जिससे मन साइलेंट हो जाए? वहां तो कितने प्रकार के मोड बटन है और यहां हेलो. So we have grown fashionably well externally, but maybe when it comes down to inner world, we are a little outdated, or maybe we did not even think about it. मन को भी साइलेंट करना इतना आसान होना चाहिए ना, वहां तो कितना आसान है फ्रेंड्स. And this disparity makes life a little complicated. So externally, so much of convenience, or when it comes down to internal being, we are a little complex. Do you agree? Hello? Yeah? थोड़ा इसके लिए टाइम देना चाहिए. So I was doing that program, self-management. So I went to an organization. It was a cold call. I had no contact, no references, just knock, 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 barged into a company. And I said, I want to meet the HR head. So they asked me, wait, and then they came, we met, and I said, I'm representing Brahma Kumaris, all the good things about Brahma Kumaris. And then I said, I want to do a program for your staff on self-management. उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है गिरीश, हम जरूर करेंगे. मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं. उन्होंने कहा अभी नहीं करेंगे. I mean, you give me some time. My people are working. I just cannot put them off from the work. So just give me some time. Maybe after 6 months we will do it. मैंने कहा सर 6 months के बाद तो करना, मैं अभी आया हूँ तो अभी कर लीजिए. 10 लोगों को बिठा दीजिए फ्री में जो बैठे होंगे. कैंटीन में मैं कर लेता. I don't need an auditorium and an LCD projector. I just need an audience and I can start. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. This is not how we do it. I tried my best, but he didn't agree. So I said fine. I exchanged all pleasantries. Thank you, Tata, bye bye, good night, visiting card, email ID, and everything. As I stepped out of his cabin door, standing at the cabin door, I looked back and I asked him a question. The question is one of the most simplest, at the same time most complicated. Only 3 words. I asked him, who are you? आप कौन हैं? उनको आया गुस्सा. Oh, his eyes popped out. And you know what he thought? आप कौन है के दूसरा connotation भी है. तू होता कौन है जो मुझे कार्यक्रम में? आप कौन है और तू होता कौन है? Words are somewhat similar, but भाव एकदम change हो जाता है. You are just insulting the other person. My intention was आप कौन है? He took the other one. उसको गुस्सा आया. I stood, looked bang into me, pinpointed and said, Mr. Gireesh, don't you know I am the HR manager of this company? मैंने बड़ी नम्रता पूर्वक, with a lot of humility, I folded my hands and I said, sir, आपके दरवाजे में डेसिग्नेशन बोर्ड में आपका पद, आपका पोजीशन, डेसिग्नेशन का विवरण है. I am asking you, who are you? You are telling me what you do. किसी को भी पूछो, who are you? Doctor, engineer, scientist, teacher, businessman. This is what you do. Who are you? So he said, my name is so and so. मैंने कहा सर वो भी लिखा हुआ है. आप शर्मा हैं, वर्मा हैं, पाटिल हैं, पटेल हैं, नायर हैं, पिल्ले हैं, चटर्जी हैं, भट्टाचार्य हैं, सिंह हैं, आलूवालिया हैं, राव हैं, रेड्डी हैं, अग्रवाल हैं, श्रीवास्तव हैं. पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया है. किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी. Tell me friends, बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नाम रखा जाता है? हेलो, हाँ जी, 31st. You don't exist for 30 days. India में on the very same day, 21st.
20 दिन तक आपसे तो अच्छा है कम से कम, उसके बाद आधार मिल जाएगा। ये तो और 10 दिन नो आधार, नो पैन कार्ड, नो वोटिंग राइट, यू डोंट एग्जिस्ट। हेलो, सो विदाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ टैग, आई आस्क यू आपके पास कौन सा गाड़ी है, आप बोलोगे MS48AF6801, अरे वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सबका यूनिक होता है। गाड़ी कौन सी है, हरीश, मनीष, सतीश, लतीश, गिरीश, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन छा जाएगा। मैंने कहा सर वो तो रखा गया नाम, आप कौन है? टी-शर्ट पता चल गया कौन है। मैंने कहा बोलिए, बोला गुजराती हूँ। मैंने कहा सर जी वो तो आपकी भाषा है, वो तो आप जहाँ से हेल करते हैं, वो तो आपका खानदान, पूर्वज, योर एंसेस्टर्स। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप भाषा बता रहे हो, आप अपने बारे में बताओ ना, हु आर यू? टी-शर्ट पता चल गया कौन है। मैंने बताइए, बोला हिंदू। ओ दैट्स योर बिलीफ, वो आपका विश्वास है। आप अल्लाह को मानते हैं, राम को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, नहीं मानते, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूं आप कौन है, यू स्पीकिंग अबाउट योर फेथ। ऐसे ही है ना आजकल, एवरीथिंग इज आइडेंटिफाइड बाय योर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, जेंडर। वो भी I kept on asking him, who are you, who are you? He kept on answering me, I kept on negating him, and finally gave this answer. मैंने कहा कौन है आप? बोला पुरुष। मैंने कहा टॉप फ्लोर खाली है सर मेरा, बट इतना अंदर तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, देख के बता देता हूँ फीमेल है या मेल है। इतना तो बेवकूफ नहीं है कोई, मैं आपका रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म तो नहीं भर रहा हूँ, गिरीश फीमेल 48 ईयर, सॉरी दैट आई गॉट क्रेजी। मैंने कहा सर यार, आई मीन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर बॉडी, हु आर यू? So this guy, you know, from normal, common, general, simple, easy छोड़कर he landed up into philosophy. और philosophy तो कभी-कभी इतना खतरनाक होता है, बोलने वाले को ही नहीं समझ में आता है वो बोल क्या रहा है, सुनने वाले को तो छोड़ ही दो। At times you wonder whether the speaker knows what he's speaking. I mean the philosopher. And you know what he told me? I said, who are you? बोला पता चल गया मैं कौन हूँ। मैंने कहा बताइए। He said, जो हूँ वही हूँ मैं। I said, what? बोला जो मैं हूँ वही हूँ मैं। मैंने कहा ये जो ही बता दो कौन है। जो मैं हूँ वही हूँ मैं। वैसे ही मेरा थोड़ा स्कैर्स मटेरियल है। मैंने कहा सर इसका तो ध्यान रखो, कम से कम सिंपल बोलो। बोला जो मैं दिख रहा हूँ वही हूँ मैं। मैंने कहा सर जी आप जो दिख रहे हो वो भी नहीं हूँ। तो देन ही आस्क्ड मी, तो फिर मैं कौन हूँ? मैंने कहा आधा घंटे से मैं ही पूछ रहा हूँ आप कौन हैं? अरे आप मेरा प्रश्न का उत्तर दो। हाउ डू आई नो हु यू आर? यू शुड टेल मी। I just came here half an hour before. You know what he did? He said, get in, take the seat, went to the door, latched it, put his hand on the latch. कहता जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन हूँ। I said, यार किडनैप करोगे आपने मुझसे? Question friend, who are you? So when we are speaking about winning, who is wanting to win? Who is losing? And what do you mean by this complete wellness? So I'll give you a different perspective which the students can relate. So when we are speaking about winning and wellness, it is per se to do with your life. Yeah, it's to do with my life. I want to win in life. And बहुत specific अगर होगा तो maybe professionally I want to win, relationship में I want to win, physical health में I want to win. So I was doing a program for the Indian Army, and very casually I have approached, hello, hi, om shanti, good morning, सब किया। फिर मैंने ऐसे ही casually पूछा, how is your life? होता ना पूछते ना कैसे चल रहा है, सब ठीक है। So if I ask you a question, how is your life? So friends, there are three probable answers: good, not good, okay. Good is awesome, brilliant, magnificent, सब अच्छा चल रहा है। Not good is थोड़ा सा tension, irritation, frustration, things not happening my way. Okay, sometimes good, sometimes कभी खुशी, कभी गम। इसमें सब आपको उत्तर बहुत अच्छी तरह होता है। मूवीज तो हमारे दिल पे है। Anyway, कभी खुशी, कभी गम। So if I ask you a question, how is your life? और मैं अगर पब्लिक में पूछता हूँ ना, तो पब्लिक में तो लोग फर्स्ट वाले में टिक करते हैं, गुड। और जब गुड में सब लोग हाथ ऊपर उठाते हैं ना, तो वाइफ हस्बैंड को कहती कहाँ गुड है तुम? सोशल मीडिया पोस्टिंग देख लो तो लगता है स्वर्ग यहीं पर। हस्बैंड वाइफ का डीपी देख के बोल तुम ऐसी दिखती हो। और इनकी
फेसबुक में जो पोस्टिंग होता है ना, वो देखकर तो हस्बैंड को सहन ही नहीं होता, तुम्हारे इतने श्रेष्ठ विचार हमारे घर में ऐसी महान विभूति प्रेजेंट है, मुझे रियलाइज नहीं। और जो लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, सब पीड़ित हैं या तो पीड़ित होने वाले हैं, ठीक है ना, फ्यूचर। With due respect, I'm just making it easy, you know. Anyway, so don't say good है, not good है, क्योंकि हम पब्लिक में तो सब झूठी बोलते हैं। So in that audience, I asked, अगर आपका life good है तो please raise your hand. So a lot of people raised their hand, and then I posed a question. I am interested in knowing how is your life good. I'm not contending it, I'm not questioning it, I'm just interested. So there was an officer of a brigadier rank. He said, Gireesh, I'll respond. I said, please go ahead, sir. He told me 5 reasons. And he said, Gireesh, my life is good. Reason number 1, because my wife is good. ठीक है. Second reason, he said, my life is good क्योंकि मेरे बच्चे good हैं. और उसमें जो छोटा वाला है ना, सुबह अपने आप उठ जाता है, अपने आप स्नान वान करके, स्कूल का ड्रेस पहनकर, खाना नाश्ता करके, खुद अपने आप स्कूल चला जाता। स्कूल से आने के बाद अपने आप चेंज करके, होमवर्क करके, थोड़ा सो के, खाना खा के, फिर ही टीवी देखता। जब वो ये कह रहे थे ना, तो बाकी जो ऑडियंस है ना, उनको ऐसे देखे थे। और एक ने तो पूछ भी लिया, सर ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? एंड उन्होंने बहुत अथॉरिटी के साथ कहा, सीक्रेट है, नहीं बताऊंगा। ओ माय गॉड, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, मम्मी पापा को इतना स्ट्रेस देकर रखा है। Anyway, third reason, he said my life is good because financially I'm healthy. Salary, savings, fixed deposit, mutual fund, stock markets, gold, property, सब जगह I've spread my risk. थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो I know how to take care of it. Fourth reason, my life is good because the health of my family members good. थोड़ा सर्दी खांसी होता है, but ऐसा कोई major illness, depression, heart attack, cancer ऐसा कुछ नहीं. And fifth, he said, my life is good because my boss is good. Look, it could include your wife, mother-in-law, head of the department, your teacher, and everyone included. ठीक है? मैंने वो सर को पूछा, सर अगर मुझे ये स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करनी होती, I would have specifically asked you how is your wife, children, health, finance. But my question was, how is your? What was my question? जोर से बोलो. How is your life? I'm asking you about life. You're speaking about wife. तो पता उन्होंने क्या बोला? यही तो लाइफ है. मैंने कहा अगर यही लाइफ है, अगर किसी कारणवश मैडम ऊपर नीचे तो फिर आप भी ऊपर नीचे, आपके बच्चे ऊपर नीचे तो देन पापा also ऊपर नीचे. Yes or no? Your result ऊपर नीचे तो your life ऊपर नीचे. तो फिर उन्होंने पूछा अगर ये सब लाइफ नहीं है, then the question is, what is life? Life your or depend on all these factors? Hello? My choice, right? हाँ या ना? कि इन पर निर्भर करता है. बोलिए. नहीं तो ये आर्ट ऑफ विनिंग को हम हेड ही नहीं कर पाएंगे until unless we figure out what the problem is. Your life, your choice, all depends on some external event, some external person, some external situation, some external event. Yeah. सर आपकी जिंदगी हो गई है, इनको पूछो. इस उम्र में आके पता चला. With due respect, sir. I'm taking your shoulder to fire at them. Hello. सचिन तेंदुलकर ईडन गार्डन्स, olden times की बात कर रहा हूँ. सचिन तेंदुलकर ईडन गार्डन्स, India versus Pakistan is nothing short of an India-Pak war. And Sachin is playing at 99 runs, ठीक है? Unlike the Narendra Modi Stadium, 1,35,000 people, about around 1 lakh people. The whole stadium is jam-packed and the whole stadium is reverberating with Sachin, Sachin. One more
run one more 100, one more feather in his camp, and we all Indians would be damn proud it is against the Pakistanis. And Sachin is playing at 19. Harsha Bhogle from the commentator's box, he's commentating, and what he saw, he speaks and he says, Sachin, instead of taking the strike, he's walking past 22 yards. I mean, what is he up to? I mean, he's going and talking to Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar ball को चमका रहा है और ये बंदा बैटिंग छोड़कर उससे बात कर रहा है. और पता है, कैमरा, स्टंप विजन और माइक्रोफोन पे हमको सुनाई दे देता है. और पता है सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर को क्या बोल रहा है? धीरे गेंद डालना, तो ही बैटिंग करूंगा. हो गया तब तो क्रिकेट. आपका और मेरा भी हाल यही है. एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पढ़े हैं तो मैं सफल होंगी. अरे वो उन पर डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड कर रहा है? हेलो. But then we sometimes so minutely rely on so many external factors. Your response to an external event and person should not be based on their behavior. It should be based on your personality. Sachin Tendulkar का mindset, I mean, I had the privilege of meeting him. तू ब्रेकली है, तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तू टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका, तू स्टीव बकनर है जिसने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में आउट है. टू हेल विथ यू. तुम सबको छक्का चौका लगाकर 100 बनाऊंगा. ये मेरा कॉम्पिटेंसी है फ्रेंड, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा लाइफ है, ये मेरा लव फॉर द गेम है. टू हेल विथ यू. Yes or no? And that's precisely the reason why you find him such a thorough cricketer. He never got into any controversies. He never blamed anybody for that matter. And it was not pretty easy. For his 100, it took him so many, matches for the 100. Imran Khan from, Pakistan कहता old horse BCCI doesn't have the guts and the temerity to take him out of the Indian 11 and still struggling with an old horse. I mean, इसको एक सेंचुरी बनाने में इतनी स्ट्रगल हो रहा. This man never uttered a single word against Imran Khan. उसको फर्क ही नहीं पड़ता है आप मुझे इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो. This man was so stable and more than a fantastic right-hand prolific batsman. I am a big fan of Sachin Tendulkar because he was a fantastic human being. वो मैं कौन हूँ? What you have is not what you are. You have 2 kidneys. I have 2 kidneys. / I am 2 kidneys. हेलो. कुछ लोगों ने पहले से लग रहा था इसका ढीला है. तो कंफर्म है. क्या बकवास कर रहे हैं? I am 2 kidneys. I am 2 eyes. I am 2 hands. You go to any doctor on planet Earth, forget about Brahma Kumaris, friends. I am speaking science. Science is universal. It doesn't depend on me and you. It has to be universally applicable. Gravity is applicable to each one of you. Whether you like it, you don't like it. Whether you're an American, you're an Indian, you're a woman or a human being. Yes or no? 9.8 meter per second square. Go to any doctor. पता आप क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब मेरा हाथ टूट गया है. एक दिन जाके कहना डॉक्टर साहब मैं हाथ टूट गया हूँ, मैं पेट दर्द कर रहा हूँ, मैं दांतों में दर्द है, मैं सिर दर्द कर रहा हूँ. बोलेगा भैया यहाँ से सीधे जाना, फर्स्ट फ्लोर चढ़ना, सेकेंड रूम साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट, वहां इलाज करो, तुम्हारा हाथ पैर सब. मैं हाथ टूट गया. There is a difference between I and my. I did not make English friends. मैंने नहीं बनाया. I'm just following what each one of you unknowingly, naturally we speak the language. My car, my mobile, my mic, my watch, my wife, my kursi, my office. कभी बोला I am the watch, I am the mobile? कभी नहीं. फ्रेंड उसकी आइडेंटिटी अलग है, आपकी आइडेंटिटी अलग है. And every identity that you're speaking is external, is possessed, is what you have had. But who are you? And that's the $1 million question. So can we understand, when it comes down to the art of winning, what is life? It's impacting every dimension of our life. In the drivenness of we're so obsessed with competition that we are sacrificing life. I have no problem with competition. You win. You become number 1 in the whole of the world. I'll help you. I'll support you. I'll cheer for you, friends. I'll be the last one not to help you. But how was the journey? How are you attaining it? With stress, with anxiety? So let me tell you my definition of life. Yeah? Before I came to the Brahma Kumaris, I was like you.
When I was 22 years of age, accidentally, I completed my education. I was doing very good in the corporate world in Mumbai. Everything was good. I had no need per se to wear a white and understand what is it. Accidentally, I got across to them. Believe me, friends, it changed my perspective and my belief system. And the challenge is, what stops you from winning and experience complete wellness is your old, outdated, rudimentary folklore, which doesn't add value to you. Those kind of mindset forces you to believe in something which is not true. I'll give you one experience, one example. In America, there was a time when children, tiny children, they would crawl out of the house and they would fall in the swimming pool, and child mortality was very high because parents would not pay attention to the little one. Babies crawl करके बाहर चला जाता था. हर घर में swimming pool, वहाँ गिर के death हो जाता था. So these Americans, they came up with a brilliant idea to reduce child mortality. Can you guess what they could have thought of? बच्चे के डूबने से मृत्यु ना हो उसके लिए उन्होंने क्या किया पता है? Just guess. क्या चीज? Say loudly. Covering debts for retractable debts. Yeah, that is an IISER response. I want an American response. Cover. Yeah. That's the Brahma Kumaris response. This guy wearing black belt, entirely opposite to me. Look at his top floor and look at mine. We are at South Pole and North Pole. But our mindset matches, young boy. पता है ये इतना frustrated है. With due respect, not to be personally, we are just playing it out. like यार खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, इनको कहाँ से संभालूंगा, जाने दे. Stop having kids. अब पैदा करो, उनके पीछे पीछे भागो, फिर कवर, क्या झंझट है. Stop having the problem. And what he said is right. मैं एक बार ऐसे पूछ रहा था ऑडियंस को, आपको टेंशन होता है? बोला बहुत होता है. बोला कारण क्या है? एक मदर ने कहा बच्चे. बाजू वाली कहती सर झांसी की रानी, पहला स्ट्रेस पैदा किया, did not stop, went for the second one. I mean, you cannot steep down to such low levels of utter degraded human existence that you call wife as a cause of stress, husband stress, professor stress. I'm sorry. Anyway, so you know what they did? They started teaching little ones swimming, infant swimming. 1-year-old baby, can you beat it? How can you teach a 1-year-old baby swimming? And when they took the little one into the swimming pool, mom, dad, and the trainer, and they left the baby went into the water, they found 2 beautiful observations. The baby could hold the breath for a pretty long time inside the water. She did not start gulping water like you and I would do it. And the baby was able to keep the eyes open. And this is called as bradycardic response of an infant. Because the baby 9 months in the womb was in a similar environment. Post-birth also it exhibited naturally these 2 traits. And they took advantage of this, these parents. वो पानी में डूबा, hold the breath, आंखें खोल के रखा था उसको ऊपर आने के लिए, उसको turn होने के लिए on the back या on the tummy, and then paddle the legs. इतना बस सिखा दिया. Please go and check a lot of YouTubes. You will find little ones swimming. Come a scenario here in India. That's where our problem is, our belief. So my parents have a little one, my entire family, friends, society, friends, we all went to a picnic spot. वहाँ पे swimming pool है, वहाँ पे lake है, वहाँ पर नदी है, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पर कुआं है, वहाँ पर समुद्र है. 2 किलोमीटर दूर से मेरी मम्मी कहती है नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा. हमको तो पता ही नहीं भाई ये डूबना क्या होता है. मम्मी, पापा, चाचा, मामा, काका, भतीजा, हर व्यक्ति डूब जाएगा. 15 years डूब जाएगा. और 15 साल के बाद समर वेकेशन में मम्मी के नाक में दम कर रखा है गिरीश ने. मम्मी बोलती बेटा तू बाहर कहीं कुछ तो कर, स्विमिंग सीख लो. बहुत अच्छा बच्चा, जा. आप स्विमिंग पूल और ट्रेनर पानी के अंदर, गिरीश पानी के बाहर. ट्रेनर बोलता है गिरीश जंप इनटू द वाटर. पता है गिरीश क्या बोलता है? सर डर लग रहा है. ट्रेनर बोलता भैया मैं खड़ा हूं ना, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? मैं 10 साल से करा रहा हूं, 10,000 बच्चे सीख के गए हैं, रिकॉर्ड है, एक बच्चा डूबा नहीं. आता मालूम है सर, लेकिन डर लग रहा है. अचार डाल लो, मालूम है का.
मालूम है मतलब इंफॉर्मेशन है, मालूम है सिगरेट पीना बुरा है, मालूम है रोना बुरा है, मालूम है गुस्सा करना बुरा, सब मालूम है फ्रेंड्स। यस और नो? जो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ कोई नहीं बैठा जिसको नहीं मालूम है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज इज पावर। I know cigarette smoking is injurious to health, and I'm powerful enough to refrain from it. मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। That is education. डरते क्यों हो? एग्जाम का डर। अरे एग्जाम तो छोड़ो, प्लीज रेज हैंड, बी वेरी ऑनेस्ट। आप में से कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है? रेज योर हैंड। यस देखो, महान। हाँ जी, अच्छा, मेरे को लगा उनको बंगाली छिपकली से डर लगता है। उसका नाम है अच्छी अच्छी। आई डोंट नो, हमारे बॉम्बे में तो छिपकली को छिपकली बोलते हैं, बंगाल में मुझे लगा अच्छी अच्छी बोलते होंगे। आई एम सॉरी, आई एम अ वेरी क्लीन पर्सन। आप लोगों को समझता ही नहीं है ज्यादा। एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी। बट क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं लाइफ को? अच्छा बच्चों जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया, सॉरी वो अच्छी में मैं कंफ्यूज हो गया। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। क्यों डर लगता है बेटा? बोलो 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 बोलो, बी वेरी ऑनेस्ट। पता है इनको क्यों डर लगता है? गंदी। ये मिस वर्ल्ड के क्या बोलते हैं, मिस वर्ल्ड बैठे हैं, इनको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया, गंदी दिखती है। हेलो, ऐसे है ना? हाँ बोलो, आई नो। और दूसरा, एक तो गंदी दिखती है, दूसरा हमारे पे ही गिरती है। उनको और कोई नहीं मिला, इन पे गिरने का उनकी इच्छा है। हेलो, छिपकली नहीं गिरता फ्रेंड्स, उसको प्रकृति ने, दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस ने ऐसा कुछ गिफ्ट। एवरी क्रीचर हैज बीन एंडोर्ड विद सम गिफ्ट। अ फ्रॉग विल हैव अ लॉन्ग टंग, अ स्पाइडर विल हैव the ability to web, you have the intelligence to discern what is right, what is wrong. A छिपकली has the capability to withstand gravity. वो गिर नहीं सकता, अगर गिर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और आप मैन्युफैक्चरर को क्वेश्चन कर रहे हो, यार गिरती है। आपके टाटा नैनो कार को आग लग रहा है इंजन में, यार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरर ने ध्यान ही नहीं दिया, ये गिरती है और आप पे गिरती है। और पता है, I mean, I'll make it more hilarious, complicated, absurd, trivial. मान लो, hypothetically, मान लो ये छिपकली की सभा होती और मैं प्रोफेसर छिपकली गिरीश फ्रॉम मुंबई, and we are discussing about art of winning in the छिपकली world, ठीक है? And then छिपकली गिरीश और you छिपकलीज को बोल रहा है आपको इंसान से डर लगता है? ये तीनों बहुत डर लगता है। मैंने कहा क्यों डर लगता है? कितने गंदे दिखते हैं, 2 पैर से चलते, क्या रबिश। और उनमें तो समझ में नहीं आता, किसी का है किसी का लंबा है, समझ में नहीं आता कौन क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। 2 पैर में चलते, पूछ भी नहीं उनको, इतना बकवास, छी। और ये उसको कह रही है, वन छिपकली से तो ज्यादा छिपकली, वो अगर तेरे पे गिर गई ना, छिपकली आप पे गिरे और आप छिपकली पे गिरो, पता चटनी किसका बनेगा? All you have to do is to just show it off, finish. And you, if you on a heavy side of the weight, you fall on a छिपकली, what happens to the poor creature? किसको ज्यादा डर होना चाहिए? But look, maybe that intelligence has been hijacked because since childhood, that's how the programming is. अब वो ट्रेनर बोलता है गिरीश बेटा तुम जंप करना यार। लॉजिक मैं तेरे को बताता हूं, ये स्विमिंग पूल का डेप्थ सिर्फ 4 फीट है, तेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की है, तू सीधे डुबकी मार कर भी खड़ा भी हो जाएगा ना, तुम नहीं डूबेगा। तो पता है मैं क्या बोलूं? मालूम है ना सर, लेकिन डर लग रहा है। क्या नहीं आस्क क्वेश्चन, ये लग कहां से रहा है? कौन लगा रहा है? आपका लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड, एवरीथिंग इज हाईजैक। बस लग रहा है, घबराहट हो रहा है। And you and I did not pose this question. Why? Is this what human existence should lead our life? For betterment, for growth, for the very purpose of human existence? Look at it, friends. Our whole objective, with due respect, I have complete respect for what you do, friends. And you should continue that work to make life easy for me, for you, for everyone. Mobile phone has made life easy. But it comes with a lot of other riders also. So let me tell you about my definition of life.
that belief since childhood. When I was in the second standard, I mean, I was not a very good academic student. मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ता था. अच्छा नहीं पढ़ता था का भाव है, मेरे मम्मी टिपिकल इंडियन मदर जैसे चाहते थे, वैसे मैं नहीं पढ़ता था. और इंडियन मम्मी पता क्या चाहती थी? बैठ के पढ़ता थी. हम बॉयज में एक जगह बैठ के नहीं पढ़ते, थोड़ा घूमते घामते मस्ती भी करते. और उस समय मेरा दुश्मन नंबर 1 पता है कौन था? मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी और उसके कारण डांट मैं खाता. और मम्मी का बस एक ही टिपिकल रिस्पॉन्स, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को. और मैं मन ही मन डांट खा के सोचता था एक दिन भगवान करेगा मैं तो देख लूंगा. अरे यार तुम बैठ के पढ़ती हो, डांट हम फ्री में खा रहे हैं. और मैं तो दीदी के पास जाके बोल, दीदी तुम भी थोड़ा खेलो ना यार, तुम भी थोड़ा घूमो ना, तुम भी थोड़ा मस्ती करना, कम से कम डांट तो कम मिले. एनीवे, हम वैसे भी नहीं पढ़ते थे. एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आए. ओह माय मामा लॉस्ट इट. एग्जाम बच्चे का है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको है? जोर से बोलिए, आपको सब पता है. वेरी मम्मी को स्ट्रेस. एंड मम्मी लॉस्ट इट. यू नो व्हाट शी टोल्ड आउट ऑफ शियर फ्रस्ट्रेशन, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और हम तो छोटे थे, हमारा तो 500 GB हार्ड डिस्क खाली था, डर वर तो कुछ था ही नहीं. अभी तो सब कचरा भरा हुआ है, छिपकली से डर. कचरा है फ्रेंड्स. फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ फेलिंग. Just check. आप नहीं थे ऐसे. When you were a little one, you had no fear. You did not try to impress anyone. Today it's all about impressing the whole world. What others are thinking about you. This all occupies a major part of your psyche, which is not helping you to win, and it will just not create wellness. Not possible, friends. Look at the ingredients. Anyway, मैं तो वैसे अच्छा नहीं पढ़ता. मम्मी का पारा ही चढ़ गया. 2 days later I had my exam. You know what she told me out of sheer frustration? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और हमको तो कोई चिंता ही नहीं. मैंने तो तुरंत spontaneous, instantaneous response, evoking response. मम्मी ने पूछा कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने कहा कितना भी चलेगा. 2, 4, 10, 1 दर्जन, 2 दर्जन. Oh, she again lost it. Her eyes popped out. Massive cardiac chest arrest, kidney attack, liver attack, full body attack. She was writhing in pain. अब बच्चा तो मम्मी से प्यार करता है. मेरा उत्तर से मम्मी की हालत खराब. आई इमीडिएटली चेंज माय डायलॉग. मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए? हमको तो कितना भी चलता है. तेरे को कितना चाहिए? यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? 100 में 100. एक भी कम नहीं चाहिए को, पूरा 100 पे 100 चाहिए. चलो छोड़ो, तो द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी हमने पढ़ लिया. हमने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, मस्ती वस्ती करके पढ़ लिया. एग्जाम पे लिख लिया. रिजल्ट का दिन भी आ गया. मैडम ने क्लासरूम में, छोटे थे ना, क्लासरूम में रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था सबके बीच में. She opened my report card and she said, Master Gireesh, come here, बेटा. हम तो दौड़ते हुए पहुंच गए. मैडम ने मुझे रिपोर्ट कार्ड देखकर कहा, मुस्कुरा के कहा, Congratulations, keep it up. मुझे तो समझ में ही नहीं आया, Congratulations किसके लिए? हम तो हमेशा कंग्रेचुलेटरी मोड में रहते. मम्मी की झापड़ खा करके भी 2 मिनट में आई लव यू मम्मी, आइसक्रीम मिलेगा क्या? अभी यहाँ पर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, टीचर ने गेट आउट ऑफ द क्लास. ओके सर. और क्लासरूम के बाहर आपके बारे में नहीं कह रहा. मैं तो मुंबई के बच्चों में क्या रिस्पेक्ट है सर की. सामने भी, पीठ पीछे भी, डांट पे भी. मैडम ने कहा कीप इट अप. वो भी समझ में नहीं आया. हम तो हमेशा अप ही रहते हैं. मम्मी पापा ही अप एंड डाउन, टीचर ही अप एंड डाउन, बड़े ही अप एंड डाउन. मूड फ्लक्चुएट हो रहा है. हमको समझ में नहीं आ रहा क्या अप. हमने रिपोर्ट कार्ड को डाउन बैग में रखा. ये तो हमारा अप ही था. फिर मस्ती में खेले. घर पहुंचे, टिंग टोंग बेल बजाए. Oh, when the mama realized the little one with the report card has arrived, she broke the Olympic record of high jump, triple jump, pole vault, long jump. एक गोल्ड मेडल मिलना हमको पसीने छूट जाते हैं. 140 crore Indians. You just have to mark the timing of the Indian mother's desperation for result. And nanosecond she reaches on the door, she opens the door. के report card मिला क्या? मैंने कहा बैग में रखा, ले लो. Oh, she pounced on the bag, unzipped the bag, took the report card, खोल के देखा. Her eyes twinkled. She had a smile on her face. Climax number 1. और मैं आंखों के कोने से देख रहा था करती क्या है. You know what she did? She went to dad. और डैड को रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहा,
मेरा बेटा है. And I was wondering, yaar, what is your contribution? You are basking in the glory of my 75, and what did you do? And छोड़ो, मम्मी खुश, पापा खुश, हम भी खुश, सब खुश है तो सब. After half an hour, she barges into my room and she gives me 2 big tight slap. Thumb, thumb. And I'm zapped. अब क्या प्रॉब्लम है यार? 75 तो मिल गए. पापा भी खुश थे, मम्मी भी खुश थे. And you see the Central Bureau of Investigation को कॉल लगा. हमको स्टेट एजेंसी पे भरोसा नहीं. I'm sorry, this is apolitical, ठीक है? हमने सीधे बाहर फोन लगाया. हमने कहा मेरे को अभी की अभी रिपोर्ट चाहिए. बताओ मेरे को आप थप्पड़ क्यों पड़ा? उन्होंने 1 लाइन में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मुझे बता दिया. पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ी? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला. लाइफ का पहला डेफिनेशन फ्रेंड्स. This little one, 6 years of age, my wonderful mother, she feels she is doing right. Right click, open a new file in a folder. Gireesh ka 500 GB के hard disk में that file, and I'm still struggling with that file. Definition number 1, life, मिलना चाहिए, getting, having. तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? फर्स्ट प्राइज मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, रैंक मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ओवरसीज असाइनमेंट मिलेगा, पीएचडी का अच्छा गाइड मिलेगा. कितने पीड़ित हैं आपके मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है. हेलो, उतना ही नहीं और भी है. ये तो सब चीजें वस्तु वैभव है. Anybody who is sensitive, emotional, प्यार मिलेगा. शादी में अच्छी लड़की मिली. या तो ये पीड़ित है या फिर बहुत सुखी है. ये दूसरे की पीड़ा पे ताली बजा रहे हैं. You are such a wonderful audience. You are able to relate to every statement what I'm speaking. Yeah, that's the best part of it. सम्मान मिलेगा, respect and regard मिलेगा, understanding मिलेगा, cooperation मिलेगा. Husband and wife, the wife out of sheer frustration tells the husband, तुम्हारी माँ के लिए कितना किया? अरे तो किया क्यों? It was all about, I'm sorry, I had no idea about what life is. It's my mom, my dad, the society, religion, books, media, internet, anybody and everybody, right click, right click, right click. And I didn't have the ability to discern what is right, what is wrong. And still, friends, I'm struggling. It's all about मिलना. और पता है वो 2 झापड़ का consequence बताऊं? मुझे एडमिशन नहीं मिला उसका दुख नहीं है, इनको भी नहीं मिला. इसकी खुशी. That sadistic pleasure, sadistic mentality. पता है मैंने क्या किया? 2 झापड़ खाकर बाजू घर के बाजू में हनुमान मंदिर, मस्जिद, जो भी कह लो. I'm just making a point here. I go to the Hanuman temple, घंटी बजाकर I thought मैं 1 नारियल चढ़ाऊंगा 75 की खुशी में, क्योंकि 2 मिला. मैंने भी अपना प्रेयर को चेंज कर दिया. मैंने भी 2 नारियल का ऑफर कर दिया. मैंने 2 नारियल चढ़ा के भगवान जी को बहुत दिल से, सच्चाई से, आउट ऑफ sheer pain, मैंने भगवान जी को कहा, भगवान जी बहुत दुख से आपके पास है. भगवान जी ने बोला मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में, बच्चे बोलो क्या चीज. मैंने कहा भगवान एक ही रिक्वेस्ट. भगवान ने बोल तो सही, सब तुम्हें मैं दान दे दूंगा. मैंने कहा भगवान जी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे मिले या ना मिले. क्योंकि उसके मिलने पे 2 झापड़ का दर्द. It is more painful when you see someone else being successful. And it is so deep rooted, friends. This will not help you that complete wellness. Forget wellness, art of winning. You're struggling. Your own competency, your own passion, your own interest, your own dedication is hijacked because you find someone else better than you. In competition, only 2 things can happen. Somebody is walking at 5 kilometers per hour के speed में. If I have to win over the other person, I have to walk more than 5 kilometers per hour. My speed has to be better than that. Yes? 2 possibilities. या तो मैं उसके आगे जा पाऊंगा या उसके पीछे ही रहूंगा. Very rare cases that we walk together.
जब मैं उससे आगे जाऊंगा, ego will creep in, friends. Wow, why am I better than him? And if you are not able to match his 5 km/h speed, inferiority will creep in. You know, that's how it is. Because every time that Rahul was the benchmark, I mean, I was a 6-year-old child. Mama told me, with due respects to the mother, I have lost her 17 years back. My intention is not to disgrace mothers. What I'm trying to say is, friends, please don't be a victim of that belief system. वो जो डर, वो सब हमारे बचपन से, please question it. That's what spirituality is all about. That's what this spiritual organization is all about. Please, we don't want you to wear white. We don't want you to leave this institution. We don't want you to, leave your social life, your professional life. I was into a professional life. It's now that, I don't find time. I don't want you to be like me. I want you to be happy, always, simple. पढ़ाई करते समय भी, एग्जाम लिखते समय भी, रिजल्ट देखते समय भी, every moment, and that's possible. It's 100% possible. It can be learned, because we have all learned how to be in more pain when somebody is winning. You have been told. I mean, it's all wrong telling. Unfortunately, my second definition, 10th, 11th standard, मम्मी ने कहा तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा. Oh my God! Second time, my mama's eyes popped out, heart attack, kidney, liver. Second time she was in pain. मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? Doctor, engineer, chartered accountant, scientist. और अगर गलती से, बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, और अगर गलती से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, the impression I have for myself, Gireesh, you are good for nothing. Because society will only give you importance if you have become. Life is not becoming something, friends. Life is not doing. और अगर आप अच्छा doing नहीं कर पाए, तब तो गए, you don't exist. और आप कर पाए, तो you are good. If good or bad का definition is all on doing. First definition, having. Second definition, doing. और ये दोनों के चक्कर में the essence of life is lost, the being. Get, do and be. Be happy, be peaceful, be lovely. And people ask me, what should I have or what should I get to be happy? Look at the complication. It's all flawed mental models. क्या करूं खुश रहने के लिए? अरे आप already being of happy हो. That's your innate, absolute, intrinsic core personality. That's how the manufacturer has made you. But sorry, we have lost. मम्मी ने कहा happiness तब मिलेगा 100 में 100 मिलेगा तो मम्मी खुश, मिलेगा तो खुश, मिलेगा तो तुम खुश. मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स. सोसाइटी ने मुझे ऐसे ही प्रोग्राम किया और मैं आज भी उसी को लेके जा रहा हूँ. किसी और को ज्यादा गेटिंग है तो हमको दुख हो रहा है, कोई ज्यादा अच्छा डूइंग कर रहा है तो फिर भी हमको दुख है, क्योंकि लाइफ इज रिवॉल्विंग ओनली ऑन गेटिंग एंड डूइंग एंड द बी इज लॉस्ट. I'll just take another 5 minutes, friends. If I mean, I'm just going to a different level. There is a difference between happiness and pleasure. Yes? हाँ या ना? Yes. So what is the difference? And everything that is pleasurable, unfortunate, is sheer unfortunate that we dub it as happiness, happiness, happiness. There is a huge difference. Even at the neuro level there is a difference. Even at the hormonal level it is difference. When a person is in a state of pleasure, evaluation, it's only dopamine secretion. When a person is in a state of happiness, it's serotonin secretion. Question, friends. Can you guess where is the serotonin maximum present in the human body? Just guess. A wild guess. Serotonin is a happy hormone, dopamine is a pleasure. You smoke, pleasure, dopamine. The nicotine from the mouth goes to the lungs, blood में mix हो जाता है, वो heart में जाता है, heart करके pump करता है, आपके brain में जाता है, वहाँ chemical reaction होता है, dopamine करके secretion. बताओ क्या करना है सर? यार क्या एनर्जी आ गई भाई साहब. हर गलत पोस्ट पे फोटो खींच रहे हैं. एक भी ढंग का फोटो आने वाला नहीं है. पता है क्यों?
तो इनकी फोटोग्राफी की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने शांति से, प्यार से, एक ही फेशियल एक्सप्रेशन में बात किया हो। मिनट मिनट में चेंज हो रहा है इसका। गुड। पता है बच्चों, सेरोटोनिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? द हैप्पी हार्मोन इज इन योर गट। I thought it is in the brain. No, please check. It's in your gut. जिस दिन आप बहुत खुश होते हो ना, उस दिन भूख नहीं लगती। Yeah? जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा ना, you start गलती, क्योंकि खाकर को खुश हो जाओ, क्योंकि वैसे तो नहीं रहा। खाने में पीना भी इंक्लूडेड। ठीक? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं। I'll tell you only two difference, friends. Marked difference. Netflix देखना, pleasure या happiness? Pleasure. चलो मैं आपके पास आया, आपके घर में, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया, जो आपको आता नहीं है बनाना, ठीक है ना? मतलब हाइपोथेटिकली, ठीक है? बच्चे इतना हंस रहे, बोले टकलू तू हर बात में हमारी हालत खराब कर देता है, तेरे को अभी सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो क्या? Every time you pull our leg, ठीक है? I'm so sorry. That's how I make it interesting, friends. With due respect. आपको अगर बुरा लग रहा है ना मेरी बात, please let me know. I'll be the first one to apologize. मेरे को apologize करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती, क्योंकि 15 साल से शादीशुदा हूँ। सर ये कहाँ के बच्चे, किसी के दुख पे ऐसा ताली बजाते हैं? एक तो मैं अपने दुख भरी कहानी सुना, he is so excited and clapping. I'm sorry, that's not right. Anyway, keep it aside. Just for a, you know, lighter way. आपने खाना वाना बनाया, let us assume वेस्ट बंगाल का जो मीठा है रसगुल्ला, या रसगुल्ला। अब मैंने रसगुल्ला खाया, I mean, मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, to be very honest, मान लीजिए मैंने खाया और मैंने आपको कहा थैंक यू सो मच, रसगुल्ला खा के दिल खुश हो गया। खुशी इज हैप्पीनेस। प्लेजर का हिंदी ट्रांसलेशन आई डोंट नो फ्रेंड्स, बट दिस इज नॉट प्लेजर। बट लुक, हर चीज में, हर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को हमने कितना डाइल्यूट कर लिया। खुश हुआ, आपको मिलके खुश हुए, मार्क्स पाकर खुश हुए। Pleasure is always is in having, is in consuming. Netflix देख करके, खाना खा करके, कुछ अच्छा सुन करके, कुछ अच्छा पहन कर, everything that your senses is consuming, it will lead to pleasure. Happiness is in giving. और वो बहुत difficult है friends. Taking, please, yeah. I want you to clap. If you can understand, I mean, what giving is all about. Thank you so much, sir. Yeah. Consuming. एक दिन गुलाब जामुन, 2 दिन गुलाब जामुन, 3 दिन, 1 हफ्ता गुलाब जामुन. There is a very high probability that pleasure and pleasurable experience will lead to addiction. It is habit forming. And it is not good. The day you don't get gulab jamun, the day you don't get your Netflix, the day you don't get anything which appeals to your senses, you will get frustrated. ये withdrawal symptom आएगा, irritation हो जाओगे, क्या करूँ, ठीक नहीं लग रहा है, smoke, वो तो extreme example है friends. Happiness. माँ खुद रसगुल्ला खाती है, माँ ना खाकर बच्चे को खिलाती है। प्लीज टेल मी व्हाट हैप्पीनेस फर्स्ट इंस्टेंस में या सेकंड में? 100% सेकंड। देने में, खिलाने में, खुद नहीं खाया, फिनिश। बहुत मेहनत करके सबने कहा, गेस्ट वगैरह आए थे, बहुत टेस्टी, मदर ने खुद टेस्ट नहीं किया, मैंने बच्चे को खिलाया। मम्मी मेरे को एक और चाहिए, द लास्ट पीस शी केप्ट फॉर हरसेल्फ, गिव्स टू द चाइल्ड। प्लीज आस्क एनी मदर ऑन प्लैनेट अर्थ, she will say I was happy. कभी नहीं कहेगी I had a pleasure. और बच्चों बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, आज का हमारा जो कंटेम्पररी यूथ है, unfortunately, unknowingly, COVID, and that's how the scenario is. We are so tempted to all pleasurable experiences, and we don't realize.
सारा दिन पढ़ाई किया, सारा दिन क्लासेस किया, सारा दिन प्रैक्टिकल किया, सारा दिन पीएचडी का काम किया, अब तो बनता ही है ना थोड़ा खुशी। प्लीज, आपको अधिकार है खुशी वाला जीवन जीने का, बट डोंट इक्वेट इट विद प्लेजर। टीवी देख करके खुश, घूम करके खुश, खा करके खुश, आपको अधिकार है फ्रेंड्स, बट उस पर डिपेंडेंट मत बनिए। Lot of unpleasurable experiences will give you long-term happiness. सुबह जल्दी उठना, सोने का जो मजा है ना सर, सुबह ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से पंखा, बाजू वाले का बेडशीट, अपना तो बाजू में, वो मार के बोलती तू अपना क्यों नहीं बोलता है? Anyway, just check. सुबह जल्दी उठना इज वेरी अनप्लेजरेबल। ककड़ी, टमाटर, गाजर खाना वेरी अनप्लेजरेबल, बट लॉन्ग टर्म है। गुलाब जामुन एंड समोसा एंड कचौरी, वाह वाह वाह, एंड लुक व्हाट may lead to anyway. Yeah. So please create the difference, and the original belief system is I am a being of happiness, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, फोर्स कहते हैं, पावर कहते हैं, लाइफ एनर्जी कहते हैं। Nomenclatures could be different. I and mine. The being. Sugarcane is by default sweet. मैंने नहीं बनाया शुगर केन को, हिंदू धर्म में नहीं बनाया, मैन्युफैक्चर मैंने बनाया। इसी तरह आप और मैं, the soul in the center of the forehead. You know, you have a mobile phone, you take the SIM card out, dead. You take the soul out, dead. Body हो या नहीं? Hello? Body हो या नहीं? है ना body? But tomorrow madam comes on stage and says, my dear friends, today we have our guest speaker here. His name is Gireesh Body. Gireesh Body, please come on stage and deliver. Shri Gireesh, DK Gireesh, Professor Gireesh, Honorable Gireesh. क्या किया? Body? आपका बच्चा डाइनिंग टेबल में कहता, पप्पा बॉडी जरा नमक दे, मम्मी बॉडी क्या करेले का सब्जी बनाए, पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बॉडी लेट हो जाता हूं तो फिर टीचर बॉडी, प्रिंसिपल बॉडी को कंप्लेन करके मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बना। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, ये बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? कमाल है। आफ्टर डेथ, Unfortunately, after death you use the word body, 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 body. लेकिन जीते जी सिर्फ इसके ऊपर ही ध्यान है, इसके अंदर चलाने वाला सिम कार्ड को नो चार्जिंग, नो टॉप। कौन है ये गिरीश जी? कौन है ये गिरीश सर? कौन है ये प्रोफेसर गिरीश? Let us assume I die the very next moment. Massive cardiac arrest is gone. What remains is here dead body. Yeah? ऐसे ही होगा ना? उसके साथ फोटो खिंचाओगे? नो, अभी फोटो खिंचाने का शायद प्रयास करोगे, अभी भी फोटो खींचोगे। लॉट ऑफ पीपल क्लिक फोटोग्राफ्स विद मी, सेम नोज, सेम डेड बॉडी में भी सेम नोज, सेम चेहरा, सेम हेयर लॉस, सेम, लेकिन उसके साथ फोटो नहीं खिंचाओगे। कौन है? नाक के साथ फोटो खिंचा रहे हो, चेहरे के साथ, दिस 5 फुट 6 इंचेस बॉडी नहीं, इसके अंदर का जो पर्सनालिटी है ना, जो इतना मस्ती करता है, इतना मजाक करता है, जो इतना इंटरेस्टिंग है, जो जोवियल है, जो इजी है, जो लवेबल है। That's how you love a person, not on the body level, but the personality within. Yes? So I am a being of happiness. Get, do, and be. I'll give you the last instance then. 4 examples. I want to get a lot of money. सब लोग चाहते हैं. What will you do with the money? I'll travel the whole world. Then I will be happy. I want to get a lot of money. What will you do with the money? I'll construct a home for my parents back in my, गांव में. They will live. उन्होंने मेरे लिए बहुत sacrifice किया. Return time. And when my parents stay there with all comfort, then I will be happy. The doing part. Money is power. Third, don't take it otherwise. I want to get into a relationship. I want to get a person. अकेले नहीं जी सकता. अब क्या करोगे? Love, care, share, respect, regard, understanding, live together. When that happens, then I will be happy. Fourth, don't take it otherwise. I want to get a baby.
ये तो दूसरे आरएनए डीएनए की, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। और क्या करोगे कोई बच्चे के साथ? Oh, the little will come, पापा, oh, क्या आनंद आएगा जी। Then I will be happy. Oh, dad will be happy. अगर यही सही फॉर्मूला होता था ना फ्रेंड्स, संसार का हर व्यक्ति सुखी होता है। That's not how it works. Please reverse the formula. Be, do, and get. Be happy. I am happy. I want to get happiness. Gone. बहुत गलत फॉर्मूला है। Please tell me what should I do to get love, do to get success, do to get peace, do to get. अरे do नहीं है. You are change. And the day I came to know this is the golden formula. Believe me, friends. I was not a good speaker. I mean, speak good to छोड़ दो. I couldn't hold a mic and speak. But today, if you look at me, I mean, it hardly makes a difference. I'm not here to impress you. I'm not a trained professional speaker. I have nothing to do with HR. It just came to me. I just wanted to convey what I experienced, and it just took shape. आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो? मैं गारंटी देता हूँ. Although I'm not a big shot, friends, I'm nobody. You will. That's how the formula is of success. Be happy. Do everything with happiness. I beg you, friends. क्या चाहिए आपको? नाम, मान, शान, अभिमान, award, reward, love, respect. You will get it. Anything. But the primary issue is, can you be happy? Because I am a being of happiness. Can you reinforce it? And every moment, 24/7, anything that you do, let's do it. And then we do meditation for 5 minutes. Meditation is that experience of being all by myself. ना देख कर, ना खा कर, ना सुनकर, ऐसे ही. अब क्या हो रहा है गिरीश? Definition of life. Life is an experience. क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? स्ट्रेस, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि जीतना है, मिलेगा तो खुश, सब क्वेश्चन मार्क है, सब डाउट है, बट ओरिजिनलिटी इज यस, यू आर अ बीइंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. चलो करते एक्सरसाइज. कीप योर फिंगर्स लाइक दिस. सब लोग करें. कीप इट एट द एंड ऑफ योर लिप्स. भाई साहब इनका एक फोटो खींचोगे, ऐसे करो सब लोग. इनका खींचिए, मेरा नहीं. यहाँ से इधर एक है ना ऐसा और एक ऐसा, ठीक है? हाँ किया. 1 मिनट. कराची से अगर भारत में जुड़ सकते हैं तो मुझे ऐसे करिए. ओठों के किनारे ऊपर क्यों धक्का लगे. स्माइल करिए और हाथ नीचे करिए. हाँ, ईद का भी पीछे हाथ नीचे और मुस्कुराते रहिए. एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक सर ऐसे ही बैठे थे. मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करो. बोलता नहीं करूँगा. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोलता हाथ नीचे करता हूँ तो चेहरा भी नीचे आ रहा है. मैंने कहा तो भगवान ही भला करे, आपको जैक का इस्तेमाल करना पड़ता है मुस्कुराने के लिए. Friends, I have a request. Can I? Tomorrow, 5:30 p.m., 24 hours. Be like this. यहाँ से अभी जाना बाहर. अभी मुस्कुराइए. आजू बाजू वाले को देख के मुस्कुराइए. Look at the person sitting next to you. और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए. ये हालत है, ये इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में. Friends, next 24 hours, consciously, deliberately, purposefully, and it should be your swa means मैं, tantra mana system, स्वतंत्र निर्णय है. Tomorrow 5:30 p.m. Come what may, let life throw anything at me. It is my independent decision. हाथ से नहीं करना. खुश हो सकता है, हो सकता है 100%. या फॉर एग्जाम्पल, इट्स फॉर द एल्डरली ऑडियंस. आप लोग यहाँ से मान लो घर जा रहे हैं, ठीक है? आपने कोलकाता का ट्रैफिक तो देखा ही नहीं. बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, ठीक है?
आने वाले समय में व्यक्ति ओवर से ऊपर से भी कर सकता है, बट अभी ऐसा गाड़ी बना नहीं है, और बन जाएगा तो वो ऊपर से भी आ जाएगा। लेफ्ट राइट कुछ समझ में ही नहीं आता भाई कौन कौन सा जगह से चल रहा है। यू आर ड्राइविंग बैक होम, पीछे से गाड़ी आके ठप करके आपको टक्कर मारता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? टेल मी, आपको क्या करना है? मुस्कुराना, अपने गाड़ी से उतरना, पीछे वाले भैया के पास जाना। वो घबरा रहा होगा, पता नहीं आपके मुख से भी क्या अच्छे शब्द निकलने वाले। वो धीरे धीरे विंडो पे, क्योंकि उसकी गलती है, वो विंडो पे नीचे करेगा। आपको 3 महावाक्य उच्चारण करना है, बिकॉज you believe in complete wellness, you believe it's an independent choice, and that's precisely is the art of winning. 3 महावाक्य। पीछे वाले ड्राइवर को कहना, भैया चोट तो नहीं लगी? ये कहाँ से दूसरे ग्रह से टपका है? ये तो धरतीवासी ही नहीं नजर आ रहा। इंडियन तो छोड़ो, अपने अनुभवों की ताली बजा रहे हैं। और this person couldn't stop, मतलब बिल्कुल करेक्ट है सर। You have descended from some other planet. दूसरा महावाक्य, पीछे वाले को कहना, भैया क्या टक्कर मारी है। अब तो कंफर्म्ड है, पहले तो सिर्फ डाउट ही था, अब तो कंफर्म्ड है। You're not from Earth. Third, when you utter these words, तब जाकर आपको दिल को सुकून, शांति and peace of mind मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट, पीछे वाले ड्राइवर को मुस्कुरा के कहना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र, इसके अलावा तो वो कुछ आता नहीं है। तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या? कितना नुकसान कर दिया, आंखें की बटन है, पता नहीं कहां से चल, यही कहना है ना, यही कहो। तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, पुलिस स्टेशन में FIR करूंगा, और वहां का जो इंस्पेक्टर ना, थाना इंचार्ज, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरे फेवर में ही करेगा, मरते दम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेट अस अज्यूम 5000 का नुकसान। कैन आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग? उस व्यक्ति ने आपकी गाड़ी का 5000 का नुकसान पहुंचाया। आप अपने हार्ट का, अपने BP का, अपने पैंक्रियास का, अपने इंटरनल सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो। उसकी जिम्मेवारी तो आपकी है ना, इसको क्यों खराब कर रहे हो? उस 5000 के चक्कर में इस गाड़ी को क्यों खराब कर रहे हो? You know why? Because we are so outward, we are so a slave. Sorry to use that word. Last and final example. ठीक है? For all the husbands here, मान लीजिए आप हस्बैंड हैं, जो भी है, okay? आप घर जाएंगे आज रात का भोजन करने के लिए, मैडम ने दाल रोटी चावल सब्जी बनाया, मैं हस्बैंड रोटी का टुकड़ा तोड़ के आलू गोभी की सब्जी है, द फर्स्ट बाइट, इतना ज्यादा नमक, तो क्या करना है आपको? वाइफ को बुलाना, अरे सुनती हो जरा इधर आओ। वो किचन से बोली, क्या चाहिए? चाहिए तो अच्छा नहीं है, वो गिरीश ने कहा था चाहिए चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस तुम ही आ जाओ। रोटी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। सब्जी लाओ क्या? वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जैसे ही आपकी वाइफ आ जाए, आत्मविश्वास, किडनी विश्वास, क्वालिफिकेशन विश्वास, PhD विश्वास, पोस्ट पोजीशन विश्वास, ऐसा कोई विश्वास इंग्लिश डिक्शनरी छान लीजिए फ्रेंड्स, नहीं है। There's only one word, self confidence। उस विश्वास से वाइफ को देखना, आंखों ही आंखों में देखना, आलू गोभी की नमक वाली कटोरा, सब्जी का कटोरा, द बाउल, टेक इट इन योर हैंड। मैं इंग्लिश में कहता हूँ, आप बंगाली में कह देना। वाइफ को कहना, आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, मेरा मध्य प्रदेश थोड़ा बढ़ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स? सपोज आई एम अ PhD स्टूडेंट और आई एम अ डॉक्टर, या जैसे मैडम मेरे बारे में इंटरनेशनल बिहेवियरल स्पेशलिस्ट, व्हाट ऑल शी वाज स्पीकिंग अबाउट। नमक कैन बॉदर यू, सॉल्ट, inanimate thing can disturb you. What life? What is your grounding of your emotional state? What PhD videos with? What professor? What doctor? And whom are you getting angry with? Your wife? Just think. Gussa is so natural.
peace and happiness and patience is so difficult. और पता है इसका कॉन्सिक्वेंस बता, मेरा बेटा पीछे बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और मैं हस्बैंड ने पत्नी पे गुस्से क्या खाना बनाया, ऑफिस में मारो यहाँ पर भी मारो, खाना भी ठीक से नहीं बनाती। I mean at times you know we lose it and you know मेरा बेटा पता है कल का इलेक्ट्यूशन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एनुअल डे कंपटीशन। और पता है क्या प्रिपेयर कर रहा है? तो गया नारी सशक्तिकरण, फर्स्ट प्राइज लेगा वो। जिंदगी में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा क्योंकि डैडी नहीं करते। इट्स एज सिंपल एज दैट फ्रेंड। वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, वैल्यूज आर caught. You have to catch it, friends. Yeah, I have a request. कल शाम के 5:30 बजे तक अभी यहाँ से जाना, जाते जाते आपको व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, कल टुमारो एक्स्ट्रा क्लास। दूसरे को बताना खुशखबरी, कल एक्स्ट्रा क्लास। एनी विच वेज अटेंड तो करना पड़ेगा। अब जब करना ही है तो दो ही चॉइस है, या तो प्यार से करो या फिर दुखी होके कर लो। यस, I wish complete success to you, friends, in all your future endeavors. I wish unlimited happiness to you, and I wish, you know, a lot of prosperity to you, to this beautiful, magnificent, prestigious institute. I wish all goodness in all your future endeavors to you and to your beautiful families and to this beautiful extended family of IISER. I really enjoyed interacting with you. I hope the same at your end. थोड़ा तो मुस्कुराइए। आपके मम्मी पापा को मुस्कुराती बेटी चाहिए, टेंशन वाली PhD वाली बच्ची नहीं चाहिए। आपके बच्चों को IISER के प्रोफेसर डायरेक्टर पापा नहीं चाहिए, हैप्पी पापा चाहिए, हैप्पी मम्मी चाहिए। Don't let it go in the drivenness of something which is not very meaningful. This is what is all about life. Thank you so much, man. I want you to... इसका basis is meditation, friends. Raj Yoga meditation. You can visit our Brahma Kumaris Center free of cost. You can learn. I want you to experience under 5 to 10 minutes of meditation. Can we experience? Come. Yeah. ठीक है? Sit back, relax. Can we give a big round of applause to the organizers, to Sir, to all the teachers? Yeah. It was worthwhile attending this program? Yes or no? Thank you. Good evening, everyone. Let us clap for E.V. Gireesh Bhaiji also. So as said, let us sit for meditation directly. Everyone sit back, sit straight, close your eyes. Meditation is a simple process of visualization. So, as the directions will be given to you, you visualize accordingly. Om Shanti. अपने मन को चारों तरफ से एकाग्र कर एक तरफ लाए। Visualize yourself in your home. Visualize your room where you every day get ready in front of the mirror. See yourself in the mirror.
today you can notice a star shining in the center of your forehead. A beautiful star. This star is me. I, the soul, the energy, who is the driving authority of the body. I am made up of 7 qualities. I, the soul, is responsible for every movement of my body. I am peaceful soul. I am a happy soul. I am a loveful soul. Peace, happiness, love, respect is all within me. My happiness is dependent on me myself. Anybody outside or any incident outside is not responsible for my happiness. It's me, myself, the king, the authority to be happy always, every time, and in every situation. I have understood that equation is reversed. I, being happy, will do my activities and perform my responsibility and get whatever I wish. Being happy in the journey of my life is my priority. And it is in my control now. I make a promise to myself that I'll remember this equation and will be happy in every second of my life. Visualize that you are feeling very light. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. You can open your eyes.
Did you understand? You got it? So for the initial you can practice it like this, and for the basic Raj Yoga meditation we have a 7 days course. So we deliver the courses in schools and colleges also, as per if principal sir allows us further, we'll have a course session for you here also. And we have meditation centers also outside. Like it is in Shyamnagar, and for you it's at Kalyani Bedi Bhavan also. You'll get the numbers when you need it. And so I request you and sir also that if we can organize a meditation session over here for the students or for the faculty or teachers as required. Thank you. Om Shanti. Thank you very much, sir, for such an enlightening lecture. It was a wonderful talk. We really enjoyed it. And thank you very much, ma'am, also. She taught us the meditation process. Thank you very much, ma'am. Now, I would like to request the audience to give a big hand of applause once again for both of them. Now I would like to request our director, sir, Professor Prashant Kumar Panigrahi, to come up on stage and present a small memento to Professor E.V. Gireesh. It's on behalf of IISER Kolkata. Both of you are requested to come on stage. Please, all of you are requested to stand up, please. They want to take some photographs with you. We had a small token of love and appreciation. Okay. Didi, are you sisters? The assistant stays close by. It's a wonderful evening. We really enjoyed. एक इधर से प्रोग्राम आप लोग इधर से लीजिए आकर एक फोटो ये बैनर पे भी ले Thank you all for making this event a success. Sushil, please come. Come. One thing we want to have for you. आ जाओ बच्चों. आप लोग का